is not there. And I shared one thing with you also, that few days ago I was doing a bonsai, and my bonsai plant died. And then I started speaking with that bonsai, and it started responding and regrow. So that is magic. So why the magic is around us, and then we are finding it somewhere else, and we want to do something which is not our part. So that's what I'm thinking. That is what I'm thinking right now about life, and we keep growing. And so I love to be growing that time. Took a lot of time, and wishing you all happy celebrations. But I'm signing off. Bye. Thank you for the lovely way of just expressing yourself of women. Thank you. Lovely. So, our next speaker, any guesses? She is beautiful inside out. She is Mrs. She was and she is Mrs. India, pride of nation, ravishing 2019 to 21. She was the lucky person who got the crown, and the crown was with her for 2 years because of the lockdown. She is a professional model and a brand influencer. She has made several public appearances and assignments. Some of them are Ace Bollywood, Kala Niketan Saris, Mumbai, Indian Runaway Week, Delhi, Ethnicity Jewels, Vadodara, and the list goes on and on. So we'll just have her here, and I welcome her. Thank you so much, Bhuvneji. She is Mrs. Pooja Desai. She is Mrs. Pooja Desai, a winner of Mrs. India 2019 to 21. Great to have you here. Thank you so much. And I'm sorry I'm a little late because I just came directly from the shoot. And it's an honor, complete honor to be on this platform. And I heard a couple of last women, and I think they are way ahead of me in terms of their journey within, because I just got introduced to Binni last year, but it has been an amazing journey with her. Especially आज जो इतना important day है हम women के लिए, तो I don't believe कि एक ही दिन होना चाहिए womenhood को celebrate करने के लिए, because we women have to be celebrated every second, every minute, every hour, every year, and for centuries, I think, because we are not only creators, but I think we are value creators. You give us something and we'll make something so beautiful out of it. Like you give us atta and we'll make roti, you give us walls and we'll make a house, you give us a sperm, we'll make a child. So we are adding value everywhere we go. So it's a big round of applause to all we women out there. And as far as my journey of Mrs. India is concerned, I would like to actually मैं थोड़ा rewind करना चाहूँगी, because I think it will give you a better idea of who I am today. मैं जब 20 years की थी ना, तभी मेरी engagement हो गई थी actually. And that time I went to my dad. I topped my MBA batch, my graduation batch, and I told my dad कि मुझे या तो modeling करना है या तो फिर abroad जाना है, because I was very good with academics. तो dad ने थमा दिए list of biodata, बोले कि nothing doing, हमारे family में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो शादी कर लो. तो at 20 I got married, and उसके बाद शुरू हुई actually journey Pooja Desai की, because after that I did my MBA in international business from Symbiosis. I did my post graduation in import export, and after 7 years of marriage, उसके पहले I was before I got married, I was actually a fashion designer. After I got married, I became a jewelry designer, and then after 7 years of marriage, I had my first kid. And after having my first kid, I put on 42 kilos, and I had post-pregnancy depression for, I think 2-3 months, because I couldn't accept myself. I was always in my 50s, and
to see myself in the mirror, like having 90 kilos on me, I just couldn't accept myself. And that's when I one day decided that I can't live like this. Either I have to learn to love myself, or either I keep blaming myself all my life. And that's when that journey of weight loss started. And then I lost all the weight. And after that, I became the captain of All Gujarat women's handball team for 5 years. And uske beech mein I had my second child. So my journey has been very bumpy, up and down, but I have no regrets because every phase, every situation has carved something out of me. So आज जब मैं पूजा देसाई को आईने में देखती हूँ तो मुझे लगता है अच्छा वो एक्सपीरियंस ने पूजा में ये इंस्टिल किया है, वो एक्सपीरियंस ने पूजा को ऐसा बनाया है, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट बिकॉज आई थिंक ये फेलियर्स ना होते, ये डाउन्स ना होते, तो I wouldn't have been Pooja Desai, what I am today. So coming to that, I had my second child. Again, I put on 42 kilos for my pregnancy. But that was easy to lose because मुझे पता था कि first time मैंने lose किया तो second time it will not be that much of an issue. तो वैसे वो सब चलता रहा. I used to keep doing my jewelry and बच्चे बड़े होते गए. And then one day my husband was like, and of course my friends also, they kept saying, why don't you try in your, try the Mrs. India or try the passion that you always wanted to. And मुझे लगा अभी ठीक है, अभी बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, why shouldn't I also not live my own dream? And फॉर्म भर दिया और चले गए. Though I must tell you that I never went there with an intention to win ever. I went with that intention to enjoy. वो 3 दिन का process होता है grooming का, where you have to go to हमारा training गुड़गांव में था, so we went there and 3 days I tell you I had the best time of my life because I have never been to a hostel, I've never been to any trips with my friends. तो हमारे लिए वो 100 finalists and 4,500 auditions हुए थे throughout India and उसमें से 100 final हुए थे. And I mean अभी भी मैं वो दिन सोचती हूँ तो मुझे लगता है crown, of course crown was the cherry on the top, but वो चीज, वो feeling, वो relationships, there's something that I can never express. It is surreal. It was something that I would die for to go again, But ऐसा ही होता है कि Mrs. India में ऐसा होता है कि it's not like Miss India जहाँ आपका body statistics या फिर आपके कपड़े या ऐसा कुछ पे judge होते हैं. Everybody, from all the fields, we had lawyers, we had doctors, we had actresses actually, we had housewives. So people from all the fields were there. And ऐसा नहीं होता कि आपको ऐसा proper figure ही होना चाहिए. It was never that. It was always this कि आप in different situations आप कैसे handle करते हो pressure को, आप कैसे react करते हो, and how with all other 99 women, how you can go ahead as a team. वो ऐसा कभी नहीं होता कि मैं ही आगे रहूं और दूसरे सब मेरे को follow करें. नहीं, that's a very wrong attitude. तो वो सब वो लोग check कर रहे थे, which I didn't know because I was on my own trip. मुझे लगा कि जीते कि ना जीते, that is secondary. इधर आए तो मजा कर लो एक बार. You don't know when you leave your kids and house and all that. So उसमें बहुत सारे sessions होते हैं, from Zumba to makeup to yoga to table learning table manners, etiquettes, and then वो normally दोपहर तक होते हैं 2 बजे से, and 2 बजे के बाद once you're done with your lunch वो लोग आपको catwalk सिखाते हैं. So from 2:30 in the afternoon to 1 o'clock in the night, you are supposed to wear your 4 inches heel and just keep walking. So it is not सबको ऐसा लगता है बहुत easy है. It's not easy because कितनों को तो first day के बाद छाले पड़ गए और किसी को bleeding हो रहा है और कोई चल नहीं पा रहा है, किसी का fracture, मेरी roommate का fracture हो गया because she couldn't walk with the heels. But that's how they groom you for 3 days. And then फिर होता है finale में तो जो regular format होता है, you have to walk the rounds and then first 5 semi-finalists, उसमें से 3 और then you get awarded. तो बहुत अच्छा रहा journey. And all the while I had lost my grandparents that same year.
And जब मेरा नाम जब announce हो ना, that the winner is Pooja Desai. So the only thing I could see is my grandparents. When I went on the stage to receive the award, the only thing that I could see is my grandparents standing in front of me and, you know, blessing me. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे पीछे या हमारे ऊपर किसी का हाथ हमेशा रहता है, you know, whether you know it, whether you don't know it, whether you can see it. So that was a very touching moment for me, and I will never forget that, because my grandfather was a very good orator, and he would have really liked it if he would have seen me, you know, get the award. So yeah. So my highly emotional, our Yeah. Every Yeah. time I remember my grandparents, I'm very emotional. Yeah. This is the woman, we always have this emotion within us, and she is Yeah, that's true. But showing overall, us. the journey was very good, and I think they're always there, somewhere looking at me, and especially my dada, because दादा को इतना था ना कि हमारे family में से कोई तो वो stage पे जाए, कोई तो, you know, they should get some award somewhere. So whenever I'm doing something big, I always remember him, you know, and I always feel that somewhere that positive energy is always around me. Your energy has reached them right now also. Yeah. Super awesome. We are so proud of you. We all are so proud of you. I'm also equally proud of everybody, because I feel, you know, with this whole journey, so my whole motto to say this whole thing was, through this whole journey, I have realized to start loving myself. Like, I'm not waiting कि कोई मुझे आके बोल दे तुम अच्छी लग रही हो, या कोई मुझे आके validation दे दे, appreciate कर दे. Those days are gone. I feel I am enough. I am enough for my own self. To like me, not to like me, to love me, not to love me. I don't need anybody else, you know. So I feel this whole journey has taught me this, that you and only you are your best friend. So give yourself that utmost importance and priority. Wow. So when the first time when I met her, she had been to my place, and I was thinking, oh, she is Mrs. She was, I think she was, no? The crown went just after we. After we met, yes. Hannah. So I thought, oh, she is coming. So I was having a little bit of that, her attitude and all that. And she, in the very first moment, she made me so comfortable. Oh, I'm so, I'm very simple. Yeah. And when she started speaking and she started sharing her journey, I was like, oh my God, she is really so beautiful inside out. Thank you so much. Lots of love to you, Pooja. Thank you. I want to say something, Yes. Vinny. Yes. Yeah, she is the youngest among all of us. See, Mridula auntie, and she believes a lot in beauty and all. And yes, auntie, go ahead. मैं नारी हूँ ऐसे तो बोलती हूँ, पर मैं रानी हूँ वो भी बोलती हूँ. तो मैं अपने अंदर भी रानी हूँ और सबके दिल जीत के मैं पूरे जग की रानी हूँ. तो आप बेटा पूजा आप भी रानी हो, और आपने तो क्राउन भी पा लिया है, मैंने क्राउन पाया है, और सबके पास यही क्राउन है रानी का. तो हमारा किरदार जो निभाना है रानी बनकर, वो जरूर निभाएं. थैंक यू. Thank you. Lovely, auntie. Okay. Thank you, Pooja. You want to share something more? No, I think I've said so much more. I've said everything. So no, but happy Women's Day to everybody, and we all empowered women should keep empowering women around us and keep inspiring each other. That's what I have to say. Thank you so much, and giving your precious time. I know you're keeping so busy, and No. you
There's always time I've for you. made it. Beach mein I'll always figure that time out. Don't Thank worry. you. Thank But you. thank you so much for having me. Thank you. Thank you. So our next speaker is, she is an MBBS MD in medical microbiology and is currently working as senior professor microbiology at JLN Medical College and Associated Group of Hospitals, Ajmer, Rajasthan. She believes she is a pure and divine soul, and she is, and attributes the purity of consciousness to her guru, Sadguru Shri Shiv Krupanand Swami, an avid practitioner of Samarpan meditation. She believes solutions to all problems in life lies in enhancing the purity of our consciousness and totally surrendering to divine plan. She has collaborated with renowned scientists to rediscover the antimicrobial and chemical properties of traditional Havan in search of novel solution to current health problems. She has been a recipient of numerous awards at state, national, and international level, and I take immense pleasure in welcoming her. She is Dr. Vijayalata Rastogi from Ajmer, and a lovely soul and a very, very good friend. I consider her as my elder sister, always there to help and guide. Thank you so much. Hello to all the beautiful ladies out there. And a big salute to beautiful soul in Binny. I really thank God every time I sit in meditation, whenever I remember her during those times. My heart is full of prayers. My heart is full of gratitude and thankfulness to God for having connected me to such a beautiful soul. मैं बीच बीच में हिंदी भी मिक्स करके बोलना चाहूंगी क्योंकि वो नेचुरल फ्लो भी आ जाता है. I think that is fine. Yes, perfect. Go ahead. Okay. मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई चीज है जो आपकी प्योरिटी को एक्नॉलेज करती है. तो I think that is the highest award you can ever get. And that I have already felt, every time. The first time I met Binny, it was just a casual thing. I had gone for a conference to Ahmedabad to attend a meditation program by my Guruji, Sri Shiv Krupananda Swamiji. And then I had an official assignment also nearby. And it just clicked like anything. You just had a feeling that you're meeting somebody with whom you have a beautiful karmic relation to relish forever. It was this feeling that has given me the strength, the confidence, the faith that has kept us together for almost 3 to 4 years now, I believe. And I'm looking forward for a beautiful journey ahead with her. And thank you so much for connecting to such beautiful ladies. I've been hearing to them. It's so awesome. I tell you, it's just straight from the heart. What else, what other way to celebrate Women's Day? I think इस तरह की celebrations normally होते नहीं है. Usually it is all very formal. You get some awards, you get some acknowledgements, you get that publicity. But the joy you feel in the heart, I think that can happen only when such pure, divine, and true souls meet on a common platform for a common and a good cause. And I appreciate Binny for that. So with this, yes, thank you so much, Binny, and everybody there. If you want me to talk on my life journey, Yes. I would say, I think looking back, almost I am 50, I'll be 50 the next year. So अब मुझे ऐसा maturity समझ में आ रही है कि yes, I am now mature enough to understand what life has taught me in these 50 years, almost 50 years, and what message I have learned, which I can share with others for their benefit. I think I would like to talk on only that thing. मैंने शुरू से ही मुझे ऐसा लगता है, going back to my childhood, I'm from Chennai. I don't know how many of my people and the participants here know that I'm from Chennai, a pure Tamil speaking. I'm from a Brahmin family, very orthodox, very highly cultured, very highly moral and ethical. So first of all, I thank my family. Family यानी उसमें सभी आ जाते हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बुआ, मौसी, सब आ जाते हैं, जिनके वजह से I think one of our speakers also talked about it, Pooja Desai also talked about it, that we are not just what we are.
we are just an accumulation of where we have been, with whom we have been, and who we have adored, where we have connected our consciousness to. जहां पर भी हमारा चित्त जाता है वहां से हम गेन करते हैं. तो मुझे ऐसे लगता है मेरा चित्त मेरे परिवार के बुजुर्ग लोगों से, जो जिन्होंने प्रेम दिया, ज्ञान दिया, संस्कार दिया, उनसे कनेक्टेड रही मैं, नॉट जस्ट फिजिकली but at the consciousness level, जिसके वजह से whatever I am, whatever little accomplishments I can do in my life, it is all because of them. It is not just me. There is a force behind you, as Mrs. Pooja Desai said. There is a big force behind you that is doing the things, making you a medium for it. ये मैंने हर पल realize किया है. तो when I was in 9th, I came from Chennai. All of a sudden, that was quite a big talk, it will be otherwise. All of a sudden, my family shifted here to Ajmer in Rajasthan. जहाँ तमिलनाडु में, चेन्नई में एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से cultural difference and educational difference, background difference, and here I came when I was in 9th to Ajmer, and I didn't know Hindi. एक शब्द नहीं आता था हिंदी में. जो आज मैं हिंदी बोल रही हूँ, तो वो एक महान जो टीचर थी मेरी, उनका नाम भी मैं यहाँ लेना चाहूंगी, डॉक्टर मंगला जोशी जी, महाराष्ट्रियन है और उस समय मेयो कॉलेज में पढ़ाती थी. उनके वजह से मैं आज एक एक शब्द जो हिंदी में बोल पा रही हूँ. My heart is full of gratitude for her, because it is because of her that I could learn Hindi in just 1 year, that too when I was in 10th, and I stood second in Hindi in my school, and I was the all-rounder and topper there, and second in Hindi in just 1 year. तो ऐसा संभव नहीं होता है कि आप खुद सीख सकें कोई चीज और कोई अकम्प्लिश कर सकें. देयर वाज अ बिग, कुछ कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, कुछ लोगों के आशीर्वाद होते हैं, कुछ लोगों की तपस्या होती है जो आपके माध्यम से व्यक्त हो जाता है. तो एक फर्स्ट इंस्टेंस था जो मेरे जीवन में समझ में आया कि इतना बड़ा शिफ्ट हुआ from Tamil Nadu to Rajasthan in a crucial year of 10th. That was a board. I was in state board there, and here I had to study in a central board. And before that, I went into a state Rajasthan board where everything was in Hindi. Even the books were in Hindi, in spite of being an English medium. So काफी shock लगा मुझे, and I was almost, I felt like crumbling down कि मेरा क्या होगा. I was a topper throughout. Academic record was good. So I had much expectation from my own self. तो मुझे ऐसा लगा अब तो मैं टूट गई. अब तो पता नहीं क्या होगा, 10th भी पास कर पाऊंगी कि नहीं. And then Dr. Mangla Joshi and many other teachers, loving teachers, जिन्होंने अपनी बेटी की तरह माना, पढ़ाया, चमकाया. जैसे कहते हैं ना, तांबे के बर्तन को भी मांझना पड़ता है, उसको चमकाना पड़ता है. तो वो चमकाने का काम उन्होंने किया, and I could wait through that difficult time. And then another difficult time came when I being from an Orthodox family, a Tamil Brahmin family, as I told you, I got married to a North Indian. Yes, it was of course a love come and arranged marriage. तो एकदम cultural change था, and I never expected, because सब लोग मुझे कहते थे बड़ी introvert है, बहुत सीधी है. ये तो I used to make that 2 plats, 2 plats to come to school even in 12th. तो people used to think ये तो बिल्कुल सीधी सादी, बिल्कुल पढ़ाकू सी लड़की है, इसकी कहाँ ऐसी शादी हो सकती है. Even I never knew it could happen. So again, there was a role of destiny in my life. And luckily, I got a very good husband and a very good family. Of course, it was not easy to adjust to a different cultural background, but then sabka आशीर्वाद रहा. तो and I got married in first MBBS. Will you believe that? Usually हमारे profession में MBBS में generally MBBS के बाद शादी होती है. तो कई सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, अगर कुछ डॉक्टर्स यहाँ जुड़े हैं मेरी कॉलेज से. तो जस्ट फर्स्ट MBBS. आज मेरी शादी थी, परसों मेरी एनाटॉमी की एग्जाम थी, उसके 2 दिन बाद आई हैड माय प्रैक्टिकल. इट ऑल हैपेंड लाइक दिस. सो इट वाज जस्ट हैपनिंग वेरी फास्ट, और मुझे खुद पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है. एंड देन आई अगेन रियलाइज्ड लेटर ऑन, लुकिंग बैक, आई एम रियलाइजिंग कि मुझे क्यों यहाँ राजस्थान में आना था, मुझे क्यों हिंदी सीखनी थी, मुझे क्यों एक नॉर्थ इंडियन से शादी करनी थी, दूसरे परिवार में एडजस्ट करना था. ये सब मेरे साधना का पथ था. मुझे आज ये समझ में आ रहा है, जब मेरा एक और चेंज आया. I was pregnant when I was in final MBBS, when I was giving my exam, and I'm thankful to get a very loving son, a very pure soul. And I had a small break of 1 to 2 years after my MBBS because of some health issues of my son, and then that also I could bear off. उस समय कुछ हवन किया था जो
मेरे माताजी ने बताया कि ऐसा हवन करते हैं श्रद्धा से तो कठिनाइयां दूर होती हैं। तो जब 9 बार हवन किया तो मन में एक दृढ़ विश्वास आया कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड द बुक्स। जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, एमबीबीएस में हम लोग जो जनरल बुक्स में जो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि उस किताब में जो चीज नहीं है तो वो है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। देयर इज समथिंग बिग दैट इज अवेलेबल, वी डोंट नो अबाउट इट बट इट एग्जिस्ट। इस चीज का मुझे विश्वास हुआ। एंड somehow beautifully, 10 years later, जैसे हमारे घर में भी जैसे हमारी सासू माँ हैं वो भी हवन करते हैं, and I along with my mother-in-law was doing havan during the beautiful days of Navaratri, and it just clicked to me somewhere around I think 2009 it just clicked to me कि ऐसा कैसे होता है कि हवन करते हैं, मतलब पूजा करते हैं, इसमें आहुति डालते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, अच्छा सा लगता है, एंड देन फाइनली हम पानी से ऐसे छींटे भी मारते हैं ना। ऐसे छींटे क्यों मारना है, मतलब क्योंकि साइंटिफिक माइंड है, साइंटिफिक बैकग्राउंड से हूं तो हर चीज में बुद्धि ऐसे चलती है कि इसका क्या कारण होगा, इसका क्या कारण होगा। एंड देन विद इन एन ईयर ऑफ दिस फीलिंग ड्यूरिंग दैट नवरात्रि, I happened to be at my RUHS is Rajasthan University of Health Sciences, and the vice chancellor there just called me all out of a blue. ऐसा कोई जानती नहीं थी मैं उनको। He called me out of a blue. He said, आपको कुछ आपने कुछ उपनिषद वगैरह पढ़े? मैंने कहा नहीं सर, उपनिषद तो नहीं पढ़ा। आप ये हवन पे एक रिसर्च करना है, आप प्लान लिख सकते हैं? मैंने कहा yes sir. I didn't even think twice. I said yes. And within half an hour, I don't know what happened. I wrote a elaborate plan on how I will analyze the effects of havan on the microbes. I was not doing it. Again, that was the 4th time when I realized कि it is not me just who is doing anything. There is something bigger behind you. That is एक अदृश्य शक्ति है, एक दैविक शक्ति है। आपने शायद अपनी प्योरिटी, टेम्पररी बोलूंगी, परमानेंट शायद रहता नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक टेम्पररी लेवल ऑफ प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस जब आपकी हो जाती है तो यू गेट कनेक्टेड टू दोस हायर वाइब्रेशंस, एंड दोस वाइब्रेशंस गेट द वर्क डन थ्रू योर मीडियम। As long as you believe in this and that it is not you, it is the higher energy that is doing. जैसे ही आपने सोचा कि मैं कर रही हूँ, then हो गया, सारा काम तमाम हो गया। That also I have felt when the ego वाली feeling आती है, not exactly ego, the sense of doing, yes it is a reflection of ego. So फिर problems शुरू भी हो जाती हैं। And another turning point in my life was when I happened to get connected to a living pure guru, that is Sadguru Shri Shiv Kripananda Swami जी, समर्पण मेडिटेशन के प्रणेता हैं। और उनके समर्पण से जुड़ने का अवसर मुझे तब मिला जब एक छोटी सी घटना हुई मेरी जिंदगी में। I was transferred to a place out of Ajmer where I was not prepared to go because of family issues. And I said, okay, my career is going to end. I'm not going to continue my job because I'm transferred. This was the feeling that I had. This was long back in 2008. तो मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया है, अब मेरे को प्रोफेशन भी छोड़ना है, पढ़ाई भी छोड़नी है, और बस अब घर बैठना है। This was the feeling I had. And then I was just going to my friend and she just suggested आ जाओ, एक मेडिटेशन की यहाँ पे 45 दिन का अनुष्ठान चल रहा है, आप आ जाओ। तो I just went along, taking along my kids, क्योंकि kids बोर होते हैं घर में। मैंने कहा साइकिल उठाओ बेटा, चलाओ। बिटिया को पीछे बिठाया, उसको उन्होंने कहा साइकिल आप चलाओ। I went with a scooty and I went to the meditation center. 45 दिन का अनुष्ठान चल रहा था, बहुत मजे मजे में 45 दिन का अनुष्ठान कर लिया। पर एक घटना बहुत टिपिकल हुई कि जब अनुष्ठान के पहले दिन जब गुरुजी का टीका लगाते थे ना, तो ऐसा लगता है हम भी टीका लगाएं। उन्होंने आगे से जो वहां उस दिन करा रहे थे जो उस प्रोग्राम को, उन्होंने कहा आप आ जाओ बेटा, आप टीका लगा दो। तो मैंने चंदन का टीका जैसे ही गुरु की तस्वीर को लगा, आई फेल्ट एन अट्रैक्शन ड्रैगिंग मी इनसाइड द फोटो। वो एक अनुभूति है जो मैं शब्दों से व्यक्त शायद नहीं कर पाऊंगी, पर आज तक मेरे दिल में वो मैंने संजो के रखा। सो that was a beautiful feeling, and there has been no looking back. And from then on, auntie I, my God. no, I was quite ambitious in life, in the sense that I was academically good. I wanted to achieve greater heights. I was a very highly emotional person. Auntie wants to say something about you. Yes, fine, please, auntie. नमस्ते बेटा।
खुश रहो बेटा, होल्ड करो। बहुत ही प्यारी आप है, बहुत ही अच्छी आत्मा है आपकी, और नो नो टीयर्स। I understand. I understand. ओके, यस, यू आर रानी, आप Thank you. रानी हैं। Thank you so much. सुनो, ओके, So, तो ये जो एंजल भी ऐसा ही काम करती है मैंने आप थोड़ा सा, मैं आपको समझ जाने के लिए थोड़ी सी बात बता देती हूँ, आप समझ जाओ बीच में। हाँ, तो एंजल थेरेपी भी मेरे साथ बहुत ही उपयोगी हुई है, और मैं भी पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग के समय उनको बुलाती थी, वो मुझे अपने तरीके से पेंटिंग्स करवाते थे। उसके बाद मेरे साथ रह के मुझे ये रेकी प्राणिक हीलिंग का प्रयोग, मेरे हस्बैंड को तकलीफ थी उसमें करने के लिए मदद कर रहे थे। तो ऐसी एंजल थेरेपी भी है, जो हम देवदूत बोलते हैं, देवी देवता बोलते हैं, वो हमारे साथ यहाँ है ही। वो बिलीव करें, जो हमें ऊपर परमात्मा के साथ, यूनिवर्स के साथ जोड़ते हैं। ओके, नाउ आप समझ गई रानी मेरी? thank you so much. This is the advantage of being with beautiful souls, you know, that we miss in our routine life, professional life. Thank you so much, Auntie. Yes. So भावनाओं में, yes, this is I think one of my, I should say, drawbacks, or I should say बहुत ज्यादा highly emotional person हूँ, बहुत कंट्रोल किया है over the years, but still, you know, बात बात पे आंखों में आंसू टपक जाते हैं. I am like this even now. बस मेरे पापा भी कहते थे, इतनी बड़ी डॉक्टर हो गई है, सीनियर प्रोफेसर हो गई है, पर तेरी आंखों में इतनी जल्दी पानी कैसे आ जाता है? So I'm still reinventing my own. I think that is the sign of a pure soul, which I said about you, right? तो वो प्योर सोल होते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। Yes. And so much. मेडिटेशन में आने के तो मैं नहीं हूँ प्योर सोल, मैं भी प्योर सोल हूँ। Yes, and I totally believe I am a pure and a divine soul. समर्पण मेडिटेशन में हमें एक ही मंत्र दिया जाता है, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ. And I believe so, and I believe so. Whenever I do that, it's not just the words, the tongue is not just moving, my heart is syncing with my tongue whenever I say this. I think यही मूल मंत्र है जो मैं सबको देना भी चाहूंगी, कि यही मानिए कि हम इस जन्म में इसलिए आए हैं, हमारे आत्मा को हमें परिष्कृत करना है. We have to take a soul journey, we have to take us ahead, take the soul ahead. एक होता है identity, एक होता है personality. My personality say me, Dr. Vijay Lata, who the people know. But people outside know me as a doctor, as a senior professor, as a researcher, as a teacher, and you know, as a guide and whatever, and other posts and everything. But the identity is my soul. ये मुझे पता है. Most secret thing that I know, and I know my flaws and I know my strengths. तो जीवन में हमें वही कार्य करना है जो हमारे सोल को अच्छा लगे, सोल को खुश कर सके, आत्मा को खुश कर सके, वही कार्य करना चाहिए. हम जीवन पर क्या करते रहते हैं? दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं. अच्छा, इनको ऐसा कर देंगे तो हमें कुछ मिलेगा, इनको खुश कर देंगे तो हमें कुछ मिलेगा. तो जब भी हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, मतलब हमारी कोई अपेक्षा होती है, एक्सपेक्टेशन होती है. And expectation always leads to misery. So you have to accept people, even if they don't, you know, accept you. You have to accept them, inspire as they are, and you have to leave your expectations, and you have to concentrate on your soul journey, your soul progress. Our सोल की क्वालिटी होती है, सतोगुणी आत्मा होते हैं, हम सबको पता है. बिनी जी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं साइकोन्यूरोबिक्स में भी, द क्वालिटीज ऑफ अ सोल. शक्ति, पवित्रता, सुख, संतुष्टता, प्रेम, शांति, ज्ञान और आनंद. तो मुझे लगता है लाइफ की जर्नी जो है एक साधना का पथ है, और कहाँ से कहाँ जाना है, हमें संकल्प लेना है. कि संकल्प ये है कि मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ, मतलब जो हम बनना चाहते हैं उसका हमें संकल्प लेना चाहिए. जो हम हैं उसको भूल जाएं. मे बी आज मैं थोड़ा मन कलुषित है, थोड़ा डल है, थोड़ा डिप्रेस्ड है, थोड़ा रोना आ रहा है, इट्स फाइन, बट
take a affirmation that yes, I am a pure and a divine soul, और संकल्प यही लेना है। और हमें साधना के पथ पे चलते हुए, साधना यानी उसमें धैर्य रखना पड़ता है, पवित्रता को जोड़नी पड़ती है, उसी के लिए सारी प्रक्रियाएं होते हैं। हम मंदिर भी जाते हैं तो क्यों जाते हैं? पवित्र होने के लिए, धैर्य को बढ़ाने के लिए। पर यूजुअली हम उन सब चीजों को भूल जाते हैं, बाहरी कर्म कांड में ही फंसे रह जाते हैं, एंड दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। अदरवाइज आई थिंक स्पेशली इंडिया में तो हमारे इतने अच्छे अच्छे मेथोडोलॉजीज डेवलप्ड हैं ट्रेडिशनली कि हम उनको यूज करके सोल प्रोग्रेस बहुत अच्छा कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर हम उसको बाहरी रूप में कर रहे हैं। बस वही एक प्रॉब्लम है। वी आर नॉट डूइंग इट टू सेटिस्फाई आवर सोल, टू प्रोग्रेस आवर सोल। तो हमें साधना के पथ पे चलते हुए पवित्रता, धैर्य और प्रयत्नशील रहते हुए, पुरुषार्थ करते हुए आगे कहाँ बढ़ना है? कहाँ बढ़ना है? हमें सिद्धि तक बढ़ना है। इसी को संकल्प से सिद्धि तक कहते हैं। पर इट्स नॉट सच अ वेरी इजी डुओ। देयर इज अ बिग गैप बिटवीन दीज टू व्हिच वी हैव टू टेक एफर्ट्स। जब तक हम, जैसे साइकिल भी हमें चलाना है ना, तो हम पढ़ते रहेंगे कि साइकिल को ऐसे चलाओ, बैठो, ये करो, प्रिंसिपल्स पढ़ते रहेंगे तो साइकिल थोड़ी चलेगा। हमें उस पर बैठना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क पुट इन करना पड़ेगा। आई थिंक लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट। वंस यू नो दैट मेरा एम क्या है, मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ, मतलब वही रीच भी करना है, वही मेरा एम है और वही रीच भी करना है। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? योग करना पड़ेगा, अष्टांग योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, हमारी आत्मा को पवित्र मानते हुए संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा हमें करनी पड़ेगी। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि आगे नवरात्र के दिन है, तो हम सब नारियों के अंदर एक दुर्गा का स्वरूप छुपा हुआ है। 9 रूप हैं दुर्गा के। ये हमें आना चाहिए कि किस समय हमें कौन सा रूप धारण करना है। यू डोंट हैव टू बी शैलपुत्री ऑल द टाइम। शैलपुत्री आई थिंक संकल्प की ही प्रतीक है ना। यू डोंट हैव टू बी कालरात्रि ऑल द टाइम, यानी अंधकार का ध्वंस करने वाली। हमेशा ये रूप धारण करना जरूरी नहीं होता, पर किस समय क्या रूप धारण करना है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कात्यायनी, जब मैं रिसर्च करती हूँ तो मैं कात्यायनी को याद करती हूँ क्योंकि उनका रिसर्चिंग एबिलिटी है। कूष्मांडा है, वो ज्ञान के लिए है। तो हर देवी का रूप जो है एक गुण को प्रकट करता है। हमें उस रूप को, उस क्वालिटी को अंदर धारण करते हुए हमें सिद्धिदात्री, यानी लास्ट जो रूप है दुर्गा का, शैलपुत्री पहला रूप है, लास्ट रूप है सिद्धिदात्री। तो संकल्प यानी शैलपुत्री का रूप और सिद्धिदात्री यानी सभी सिद्धियों को धारण करने के लिए, सभी सिद्धियों को हासिल करने के लिए। तो हमें हर रूप को धारण करना आना चाहिए। तो पहले हमें शक्ति को पहचानना आना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी, मेरे से पूर्व जो इतने ब्यूटीफुल लेडीज ने जो भी शेयर किया था, इट इज जस्ट अ reiteration of what they have told actually. So you have to love yourself, you have to believe in yourself, trust your instinct, don't compare yourself with anybody. You are unique, you are amazing, you are beautiful, and always persevere for the goal that you want to achieve. You have to persevere. Take the onus on yourself. You have to be a responsible woman. You have to take the responsibility. Stop complaining, stop blaming. Blame game khatam kariye, and always try to satisfy your soul and not just others. जैसे आप अपने soul को satisfy करेंगे, I think people will get satisfied gradually when they understand you, that your intentions are pure, your actions are pure, your thought is pure. I think vibes की बात करी थी, I think डॉक्टर डिम्पल मेहता ने करी थी vibes की बात। तो हमारी वाइफ जरूर पहुंचती हैं। एंड मैं इसलिए भी बिलीव करती हूँ क्योंकि बिनी जी के साथ मिलना, मृदुला आंटी जी के साथ मिलना, मृदुला आंटी जी के साथ मेरा मिलना एक अलग एक प्रसंग है, उसके लिए शायद टाइम लंबा चाहिए, फिर कभी और शेयर करूंगी। तो ऐसे ही नहीं मिलाता ईश्वर आपको, किसी से आप मिल रहे हैं मतलब देयर इज अ बिग रीजन बिहाइंड दैट। बिलीव दिस, बिलीव इन द डिवाइन प्लान and submit yourself, surrender yourself totally to whatever is happening. आपको अपना भगवत गीता भी यही कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलवे कुर्वु माते संगोस्तु अकर्मणि। यानी do your efforts, don't stop doing your efforts, detach yourself from the fruits of the efforts and surrender to God. I think that is the message I would like to give to all the beautiful ladies out there. And one last line is health जो है हमारे traditional WHO World Health Organization जो है health को define करता है. Health is a state of complete physical, mental
social, and of course yes, spiritual well-being. इसको भी acknowledge तो करना चाहिए. But then what is the measure? कह देना बड़ा आसान है, शब्द बड़े tactful होते हैं, शब्दों से कुछ हासिल नहीं होता है, उसको measure कैसे करेंगे? I think if you want to measure somebody is in good health or not, you have to see whether they are enthusiastic, enthusiasm to do the work. enthusiasm अर्थात उत्साह, उत्साह होना चाहिए कार्य करने के लिए, अच्छे कार्यों को करने के लिए, and enthusiasm to be compassionate. I think this is very very important. जिस कार्य करते रहना काफी नहीं होता है, उसमें compassion होना, सबके प्रति आदर सम्मान का भाव होना, प्रेम होना, सबके लिए. I think who said this? Dr. Dimple Mehta. नहीं, Dr. Dipali had said, I think, Bhavatu Sarvam Mangalam. That's a beautiful line. सबके लिए अच्छी कामनाएं करना. When you have such good feelings, यानी सद्गुणों का संवर्धन आपने कर लिया है, वो आपके उत्साह में हमेशा दिखेगा. I think that is the measure of good health. So we need to redefine the definition of health, and I'm planning to write an article to WHO on this also. So all your reviews on this are all, most welcome, and thank you, Bini ji, for giving the opportunity to, open the heart and share. It's a pleasure always to connect to you, to have you on any platform. It's always a pleasure. Thank you so much. Thank you so much. Lovely ladies. Thank you so much. Thank you. Love you, beta. So much. Bye. Thank you. So our the next speaker, that is a surprise for her also. She is like my younger sister. And so much connected to her now in last 2 years, and I haven't seen till now such a pure soul like her. She is so soft. She's she's Dr. Shreya Mehta, and I all my heart for her always. I'm putting her on spotlight. Thank you, Dee. You are making me emotional again. Okay. Okay. First of She's all, looking so beautiful. So I would like to say we all are looking beautiful today, and she is looking so beautiful today. thank you, Dee. When You are she gorgeous. applies this bindi, तो बहुत ही ज़्यादा sweet लगती है. Okay. First of all, it's really inspiring and truly empowering to hear these life stories from all of you. Truly. आप सबके आगे अभी मेरी तो कुछ like journey, if I say कि मैं अभी journey start कर रही हूँ, तो I think it's not wrong if I say that. जैसे अभी डॉक्टर विजयलता ने बोला कि she believes in divine planning, तो I also believe in divine planning. मैं कभी कुछ plan नहीं करती हूँ, और बचपन से ही I have learned around more than 45 healing modalities and everything. और बचपन से मेरा जैसे छोटे बच्चे का होता है ना, I had dream कि मुझे डॉक्टर बनना है, ऐसा था. But due to family business and all, my background is from commerce. तो वो एक पढ़ने के लिए मैंने पढ़ लिया था, लेकिन हर टाइम मेरा मन जो था वो सारी healing modalities और research science ये सब में ही था. तो I used to live my life according to divine planning, कि जैसे जो आता है live with the flow. I had setback, I had depression, जैसे सबकी life में होता है. So like ups and downs, I have seen many ups and downs in my life, overcome them, and even got strength from them. जैसे अभी शायद विजयलता मैम ने ही बोला कि जैसे फेलियर नहीं आता है तो दे डोंट मेक यू स्ट्रांग, तो फेलियर आपकी लाइफ में उसी लिए आता है कि आप उससे कुछ सीखो. तो सेम हैपेंड विथ मी, और जैसे जैसे जर्नी में मैं आगे बढ़ती गई विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट एनी प्लानिंग, डिवाइन ने ऑटोमेटिकली मुझे विनिधिस मिला दिया. And she not became a channel, but she is truly inspirational for me and motivation me each and every moment, every step of my life. आज एक भी दिन ऐसा नहीं है जब हमने बात नहीं की होती है. तो
without my best friend are my parents. मैं सब कुछ उनके साथ जनरली शेयर करती हूँ, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि सब कुछ मैं विनीति के साथ मोर शेयर करती हूँ. अगर कुछ भी है मेरे अंदर तो आई शेयर विथ हर. इट्स जस्ट लाइक दैट. तो अगेन डिवाइन प्लान कैसे ये कहाँ से आ गया, मैंने तो सिर्फ 2 दिन में यहाँ से मैंने सीखा था. एंड देन मैं यहाँ पे वापस आ गई थी. तो हमारा अगेन एक जो होता है कि ऑफलाइन चल रहे थे उस टाइम तो क्लासेस, तो हम लोग टच में नहीं थे अगेन. लेकिन जैसे ही वर्चुअल वर्कशॉप स्टार्ट हुए तब से वी हैव बीन इन कांस्टेंट टच. और कैसे डिवाइन ने मुझे she is like a really soul sister, and she is more than mentor and friend and everything to me. तो उनकी जरिए मेरे कैसे एक जो ड्रीम था बचपन का, वो मुझे भी नहीं पता चला कि कैसे आई हैव बिकम अ डॉक्टर. और ये जर्नी भी जो डॉक्टर बनने की थी वो भी उतनी सिंपल नहीं थी. बिकॉज ऑलवेज आप जब ड्रीम अचीव करते हो तो आपको कुछ ना कुछ हर्डल्स या कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आती है. there is a time you think to give up everything. लेकिन she was there every time. जब भी कुछ ऐसा हुआ, she was always there to motivate me. And biggest support, my parents as well, my family. And also all your lovely souls who always give me warm wishes and blessings. Your small little messages really inspired me a lot. So people usually tell me that I'm very emotional. मैं ज़्यादा sensitive हो जाती हूँ, जैसे अभी आप हो गए. लेकिन I believe कि ये मेरी strength है, क्योंकि इससे मैं लोगों से connect हो पाती हूँ, मैं उनको समझ पाती हूँ. तो I could learn from them as well कि वो क्या feel करते हैं या उसको कैसे handle करते हैं उस situation को. तो again जैसे अभी तो दीना just she's giving me like a surprise, so I haven't prepared anything, but again it's truly प्रिपेयर करना ही नहीं चाहिए, then only it will come out from the heart. Yeah. So truly I'm really happy and honored to be here between all of you lovely ladies, and it's really inspiring to hear all your stories. Thank So you. as Thank you she all. believes in divine power and divine plan, Totally. she actually, that was divine's plan, that she could do her PhD. She has learned so many healing modalities, but then now she is getting a degree, right? That is divine's degree. And our mentor Dr. Chandrasekhar sir always used to say कि ये आप नहीं डिसाइड करते हो, जो साइकोन्यूरोबिक्स का पाथ है ना, ये आपके लिए भगवान डिसाइड करता है. वो खाली आपकी प्योरिटी देखते हैं, and those who are pure definitely comes on this journey. She is one of them. Lots of love to you, Shreya. Thank you, Dean. Thank you, everyone. Happy Women's Day to all of you. Love you, Beta. Thank you, Auntie. Too. Even another surprise is, like I want to say, as Dr. Vijayalata said ना कि हवन का बताया था उन्होंने, तो ऐसे ही कोई हवन की पूजा की थी मैंने, और वो पानी, I was just sprinkling that water in the entire house, and I was looking for a social media marketer, right? पर वो भी मैं भी डिवाइन को completely have surrendered myself कि वही डिसाइड करते हैं, because ये सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छा बताया, डॉक्टर विजयलता ने बहुत अच्छा बताया कि we are not the person to decide, right? He uses us and we just work on our purity. So I was in search because ये science इतना अच्छा है, the psychoneurobic science इतना अच्छा है, and it is my mission to take it to lakhs of people around the globe. So I was struggling, I was finding a social media marketer, and जिस तरह से जैसे हवन हुआ घर में, पंडित जी आए थे और उन्होंने बोला कि ये पानी पूरे घर में छिड़कना है. So I was just sprinkling, and I got a call from Hetal Patel, and I immediately took it as a divine decision, and I finalized, yeah, you are going to work for me. And I'm working with her. She is working with me since November, October end, I guess, right? So I would like to introduce her. She is Hetal Patel, and again,
same, very pure, very, very hardworking, and she's so passionate about her work. And the best part is she likes to work with healers, trainers. So she has given my identity since 4 months. She is working super hard. Thank you for Thank you. everything, every little thing that you come up with, every single idea. So she is making me shine now on social media. No. It's nothing. It's nothing. It's nothing in my hands. It's your soul, your purity, and the things you are doing, selflessly. That is making you shine. So I'm really very thankful to you that you have given me this opportunity and to speak between such a, pure soul and such a highly highly educated in all means, to speak in front of you all, like I'm feeling so this. The best part I would like to add about her is she never gets demotivated. She always has answer for all problems. Whenever I say na कि यार leads नहीं आ रही है, convert नहीं हो रहा है, she always comes up with new ideas. See, I've thought this, and she keeps on upgrading herself by attending workshops herself, and keeps on enhancing her knowledge all the time. Yes, Say yes. now, share your journey. How you came into this? As like मेरी journey तो आप लोग के सामने, like I feel like very small, and मेरी journey I feel like it's like as हमको भगवान ने woman बनाया है, तो we are meant to do the struggle, right? हमारे अंदर भगवान ने वो 9 देवियों की शक्ति दी है, पर ये हमारे अंदर है कि हम उस शक्ति को कब पहचाने और उसको कब सही रूप में उसे बाहर लाए, वो हमारे अंदर है। जैसे विजयलता जी ने बोला, फिर काफी और लोगों ने बोला कि एक टाइम आता है कि जब हम वो डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही कनेक्शन हुआ, फील हुआ कि जब मैं अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल I went, like, I was a younger child, a girl child, obviously, and my parents did not expected a girl, and they really wanted a boy. So family का वो perspective मेरे लिए, but I never, मैंने फिर उनको ये नहीं फील कराया कि मैं लड़की हूँ और मेरी limitations है। मैंने अपने आप को हर टाइम यही प्रूव किया है, I'm limitless, I can do everything, and I have that power. और ये सारी खूबियां मेरे फादर ने मुझे सिखाई थी कि यू डोंट हैव टू थिंक व्हाट अदर वुमेन्स थिंक, यू हैव टू बी एक्सेप्शनल। और उन्होंने जो सिखाया वो ही आज मेरे अंदर है। मैं क्राउड में बाकी सब लड़कियों से, लाइक आई यूज्ड टू फील लाइक अलोन, मुझे ऐसे अकेलापन महसूस होता था कि लाइक क्यों मेरी थिंकिंग उनसे अलग है, क्यों मैं अलग उनसे अलग बिहेव करती हूँ। पर मुझे ये लगता था कि लाइक आई हैव टू बी स्पेशल। ऐसा नहीं है कि आई हैव दैट ईगो, बट मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उनसे ज्यादा कैपेबिलिटी है, मैं कुछ ज्यादा कर सकती हूँ। और इसी खूबी के कारण लाइक इवन आई कुड रीस्टार्ट माय करियर। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड, हमारी लव मैरिज हुई थी, एंड वी मेट इन लंदन बेसिकली। तो हम लोग लंदन थे, पढ़ाई की, फिर देन आफ्टर वी गॉट मैरिड, वी केम बैक टू इंडिया फॉर सम रीजन। देन आफ्टर माय हस्बैंड, उनको अपना फार्मिंग का बिजनेस संभालना पड़ा, और साथ में जॉब भी करते हैं, और मुझे ऑब्वियसली मेरी घर की गृहस्थी संभालनी थी। आई बिकेम अ मदर, but something was missing, like मुझे ऑलवेज था कि ये इतनी सिंपल लाइफ के लिए मैं नहीं बनी, कि मुझे अपनी आइडेंटिटी ढूंढनी है, आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। तो मैंने सारी छोटी छोटी चीजें, एक्चुअली आप लोग सब सिटी से हो गए, पर आई लेट मी टेल यू कि आई एम राइट नाउ करंटली आई एम स्टेइंग इन वेरी रूरल एरिया नियर नवसारी। तो मेरे लिए वो पॉसिबिलिटीज बहुत कम थी कि आई कुड गो बैक टू द ऑफिस जॉब, और मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ अर्न कर पाऊँ, या फिर अपने आप को अपने लिए कुछ
क्योंकि हम पढ़े लिखे तो हमें होता है कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए, लाइक यस वी आर मदर, वी आर गुड वाइफ, हम अच्छी बहू है, पर इससे ज्यादा कुछ हमारे लिए तो हम कुछ करें। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों में ध्यान देने की कोशिश की कि मैं कहाँ मेरी खूबियाँ कहाँ पे है, व्हाट आई एम गुड एट, व्हाट आई कैन डू बेस्ट। मैंने इस दौरान लाइक मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। एज आई एम अ गुड आर्टिस्ट, आई हैव अ गुड फैशन सेंस, तो आई थॉट अबाउट फैशन डिजाइनिंग, आई थॉट ऑफ ज्वेलरी डिजाइनिंग, बहुत सारी चीजें थी। पर जब मुझे ऐसे लगा कि नहीं इससे ज्यादा कुछ मैं और कर सकती हूँ, तो देन आई स्टार्टेड थॉट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। फिर मैंने सोचा कि अभी ये तो कैसे शुरू करना है, मुझे ये कैसे मिलेगा। भगवान फिर मेरे लाइफ में एक बहुत भगवान ने लाइक मुझे आई डोंट नो कि एक एंजल जैसी हीलर है जो दमन में है, उनसे मिलवाया उन्होंने, और उन्होंने मुझे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देते गए। उन्होंने बताया कि कैसे आपको अपने आप के लिए मांगना है। आज मैं अभी तक जो थी लाइक आई डिड नॉट न्यू कि मुझे कैसे अपने लिए मांगना है। मैं बहुत नास्तिक थी सीरियसली, लाइक बिफोर दिस 3 years मैं बहुत नास्तिक थी, मैं भगवान को प्रे भी नहीं करती थी। पर उन्होंने ऐसे बिलीव करवाया कि नहीं, यूनिवर्स इज देयर, दैट पावर इज देयर एंड इट इज ऑल विद इन अस। जब तक हम वो पावर को पहचानेंगे नहीं, उस पावर से हम कुछ मांगेंगे नहीं, तो भगवान कैसे हमें देगा कुछ। तो आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन। मैं वो उनकी स्टेप बाय स्टेप चीजों से मैं जुड़ती गई, और भगवान ने धीरे धीरे मुझे दिया। एंड आई वाज इट वाज लाइक रियली सरप्राइजिंग फॉर मी कि ये सारी चीजें ऐसी हो सकती है कि मेरे लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई। मैं कोर्सेज किए, फिर लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में बहुतों के साथ लाइक बहुत स्ट्रगल सबने सहन की है। आई नो कि बहुत से फैमिलीज ने अपने नियर डियर वंस को भी लूज किया है, बट लॉकडाउन वाज रियली फ्रूटफुल फॉर मी कि आई कुड कनेक्ट टू the best institution where I learned digital marketing, and I could find myself like, yes, this is something I can do. And yes, so that was a thing, like, and I am in that journey. I don't call myself as an expert, because life के हर एक पाथ में हमें कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। और यस मेरा एटीट्यूड के बारे में जो बिन्नी जी ने बताया कि यस इट्स पॉजिटिव, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माय फादर। ही ऑलवेज थॉट मी कि आपको अपने अंदर वो चीजें रखनी है, तभी जाके लोग सामने वाले आपको आपके अंदर बिलीव करेंगे। यस इट्स ये नहीं है कि कोई आके आपको अप्रिशिएट करके जाएगा, कोई आपको कुछ बताएगा तभी आपके अंदर वो आएगा, नहीं, हमें वो खुद अपने अंदर लाना है, और हमें अपने अंदर वो तराशना है कि हम वो कैसे बाहर लाए खुद ही। और फिर धीरे धीरे मैं जो अभी तक मैंने जितने भी जिनसे काम किया, मे बी दे आर स्पिरिचुअल हीलर, दे आर न्यूरोलॉजिस्ट, एंड अभी तो मैं बिन्नी जी के साथ काम कर रही हूँ। सो इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल, और मुझे उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि डिवाइन ने उनके साथ मुझे कनेक्ट किया है। And today I am sharing this platform, my journey with you all. So it is real. I am highly obliged, and thanks everyone. Be proud of yourself. And the video that she has created is lovely. The background she has created is lovely. So all the efforts that she has taken behind this event to make this event successful. Thank you so much, Hetal. So from the audience, anyone who got inspired and would like to share their heart out, it's open. Anyone from the participants who would like to share? The ladies, lovely ladies. I saw Janisha as well. She is also my strong support. Where is she? Is she there? Myself. Okay, you want to share? You want to share? Great. Come on. Myself, Seema Krishna Prakash here. And
And I've been working as a teacher and as a lecturer in different schools and colleges. I've taken a long break, which has been going on. And today, actually, whenever I used to go to the class, particularly, so my class used to be on the moral values more than the teaching. And that was the most valuable lesson I thought I would have to teach my kids. But today, when I listen to all the ladies over there, really, one or other, they have their own inspirational stories. I mean, the experiences, what they have shared with us is really inspirational, which I would like to further utilize for my teaching. Thank you so much for the wonderful session, ma'am. Lovely. You are wife of Krishna, sir? Yes. Okay, great, great. Thank you. Thank you for being present here. Thank you so much. Anyone else? Ye Taru Modi. Do you want to share? The virtual hand is raised. I think she's not connected properly. Okay, so we'll conclude the session, and I extend my heartfelt gratitude to all the highly inspirational personalities and giving your precious time. My Reiki mentor, C.A. Javani Shah, Dr. Vijayalata Rastogi, and our universal mom, Mridula Auntie, Dr. Dipali, Mrs. Pooja. Is she there? Okay. And Dr. Dimple. So lots of love. And to all of you for being present. You all are also inspiring, so inspiring, always, all the time, with your messages and all. So lots of love to you all. And again, I would like to end with the same message, because that is so connecting to each and every one of you present here. You are not just a body, you are not just a face, you are a mind, you are a soul. And just celebrate who you are and be happy and try to do the things which give you happiness. The day you believe in yourself, everyone will believe in you. And live your true self. Live your true self. Be the vulnerable you are. Okay? Don't live a fake life. Be the way you are. We are meant to live a journey. We are given a role to play and live that self of yours. People want that honesty, that true self of yours. Okay. We'll conclude, and thank you so much, everyone, for your precious time and lots of love, gratitude, and kindness to each and every Khush one. raho, beta, khush raho. Thank you, Benny. Thank You you, are Benny also very ma'am. inspiring. Thank you, Lots and ma'am. lots Thank of you. Thank you. Thank you. Thank you, Benny ma'am. All the lovely ladies, really, you are so great soul. All are. So are you, Sunita Thank you, ji. thank you, everyone. Thank you. Thank you, Oh, Benny. thank you, everyone. everyone. Thank you, Binivan. It was very, very inspiring to listen to everyone. Your speech made me cry. So connected. बिन्नी मैम की वजह से हम सब लोग जुड़ पाते हैं और ग्रेट पर्सनैलिटीज के साथ मिल पाते हैं. थैंक यू बिन्नी मैम. Here I have my mentor. She is my inspiration. I have learned a lot from her, and I'm following that path. Yeah. Thank you, Billy. Thank you very much. Great job. And have a lovely day ahead. Lots of celebration coming up. Billy ji.